One of the very important topics in pollution is plastic pollution. And I've seen a lot of students being confused about, sir, plastic pollution का क्या rule है, क्या act है, what are the provisions. So in this short video, let me discuss what are the provisions related to plastic pollution in India. Number one, plastic pollution का कोई अलग से कोई act है नहीं. Okay, it comes under the Environmental Protection Act of 1986. दिस EPA के अंडर में बाकी वेस्ट भी आते हैं, लाइक सॉलिड वेस्ट हुआ, ई वेस्ट हुआ, इसमें प्लास्टिक वेस्ट भी आता है. सो अलग से एक्ट नहीं, बट प्लास्टिक पोल्यूशन इज मैनेज्ड अंडर डिफरेंट रूल्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन प्रिवेंशन. ये रूल्स तो काफी पुराने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1998, बट द रिलेवेंट रूल्स दैट वी शुड नो इज 2016 ऑनवर्ड्स. 2016 का रूल है, 2018 का रूल है, 2021 का रूल है, 2022 का रूल है, and recently we also had the 2024 ka plastic prevention amendment in the rules. Let me quickly tell you one by one what are they. First is 2016 mein, okay, we first decided that we will now start to limit our plastic production itself. If you look at the rules before 2016, it was more about recycling, it was more about reuse of plastic. But plastic production हमें कम करना है. This was taken up under plastic pollution rules of 2016 में, that we must reduce the plastic production. इस context में एक important context आया EPR concept, EPR which is extended producer responsibility. EPR वैसे तो अलग से बाकी rules में आया था, but plastic pollution में पहली बार it was introduced in 2016. EPR है क्या? EPR what it does is, it does not put the entire responsibility on the consumers alone. Consumers maybe they are responsible for segregating and disposing it. But plastic अगर production रोकना है, you must hold the producers responsible, you must hold the manufacturers responsible, you must hold the importers and the brand owners responsible. So when we put the responsibility on all the players of a particular supply chain, पूरा शुरू से end तक, किसने मैन्युफैक्चर किया, किसने प्रोड्यूस किया, किसने इंपोर्ट किया, कौन ब्रांड है जो प्लास्टिक यूज करके आपको बेच रहा है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कलेक्ट द प्लास्टिक, टू रीयूज द प्लास्टिक एंड डिस्पोज द प्लास्टिक. दैट्स कॉल्ड एज EPR. EPR इन प्लास्टिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 रूल. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब 2018 में द इंपॉर्टेंट चेंज वाज दैट वी डिसाइडेड टू फेज आउट मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक. Multi-layered plastic are one of the most dangerous one, least recyclable one. Even when you put them under treatment to generate energy, इससे energy extraction भी बहुत minimum होता है. Multi-layered plastic you can see in food wrappings, in गुटखा packets, in lace के packets में, इसमें 2-3 layer दिखाई देता है. एक अंदर में एक shiny type का layer होता है, looks like aluminum foil. Then there is one layer, a third, a very thin film coating. We call them as MLP. MLP are one of the biggest challenges in waste disposal of plastics and then recycling also. So in 2018 rule we decided कि इसको हम phase out कर देंगे. Then comes 2021 का rule. 2021 के rule में the important decision was that we will completely ban the production and use of single-use plastics. These are very thin plastics, a carry bag, polythene type, जो आप बार-बार use नहीं कर सकते, जिसमें कि disposal is problem and it's very easy to litter them. So 21 rule we decided we'll completely stop and ban it, and the ban got enforced दो फेज में, जुलाई में भी हुआ और दिसंबर में भी हुआ. But दिसंबर में we decided that we'll also increase the minimum allowable thickness from 50 microns to 120 microns. So जितना thick plastic होता है उतना easy होता है to recycle and manage it. जितना कम thin होता है it's more polluting. It is more likely to form microplastics. It is more liable to litter and thrown around. So 18 is an important rule in plastic pollution में, जिसमें कि हमने एक तो single use plastic हटाने का decision लिया. Second is the thickness allowed, permissible thickness allowed was increased to 120 microns. 2022 का बहुत अहम नहीं है, but 24 का जो rules है वो important है. Because 24 rules में we added the concept of what are biodegradable plastics and which type of plastics are considered to be biodegradable, and we decided कि EPR के अंदर में what type of people will be involved. पहले EPR was more about producing, importing and brand owners. अब हम कह रहे हैं EPR is also applicable to those who prepare the intermediate chemicals, not the actual manufacturer alone. जो intermediate chemical inputs बना रहे हैं वो भी important है part of EPR.
24 का जो रूल्स था, द रिसेंट वन, इट इज अबाउट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स and about extending the EPR to the conventional notions of producers, manufacturers, to include even the intermediate producers. I hope इससे आपको पूरा याद हो जाएगा 2016, 2018, 2021 का रूल and 2024 का रूल, which are important in plastics prevention pollution.